Hello. Hello. Is there anyone? Mr. Om Prakash? Hello. 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 Again. Mr. Om Prakash? Again. Good Hello. evening. Good evening. Good evening. Au kiye achanti? Asileni ko mane madam asileni ki? हाँ सस्मिता मैडम आसिलेनी आ आस्ते आस्ते जॉइन करूचंती. Okay. Okay. So should we start? Can I request Sasmita madam to come on video, please? Hello. Am I audible? Mo katha ta subuchi samastaku? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. You are audible. Acha, Sasmita madam. Actually, I'm trying to show the video, ma'am. Actually, I have sent my PPT to Om sir. Present the PPT and I will speak here only. Okay. Very good evening. Very good evening, Sasmita madam. बहुत भल लागिला. You were such a young, energetic officer. तो बहुत भल लागिला. आपनको संगरे एबे बहुत subject रे आमे कथावार्ता करिबा. जे आपणकर पीपीटी आरंभ करिबा पूर्वरु मु आपणकर टिके इंट्रोडक्शन देबी. आउ आजि आमे को टॉपिक रे कथावार्ता करिबा से विषय रे टिके समस्तन को कहिबी. तापरे then we will start the PowerPoint presentation. आउ तापरे आपण प्रत्येकटी PowerPoint presentation को एक्सप्लेन करिवे कोन एथे आपण मैटर रखिचंती हमर भाई भौणी मानक पाइका रूरल एरियाज रे. Okay, so good evening everyone who is there online, and I am Usha Shirat, director of Horticulture Activities Private Limited and chairman of OCF. And then today I am the moderator of today's evening conversation discussion on the special topic is promotion of integrated farming in tribal areas. आउ एई विषय रे आलोकपात करिवे आम संगरे रहिचंती Mrs. Sasmita Jena. She is an officer, she is the assistant director of agriculture in Krushi Bhavan. तो से आम पाई का आमर जो रूरल एरियाज रे जो ट्राइबल एरियाज रे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सब करूचंती आ विभिन्न प्रकार प्लान रखिचंती से विषय रे से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जरिया रे किछि कहिबे. आमे माने सेथिरु बहुत किछि सिखिबा. तेनु दया करी समस्ते ऑनलाइन रे रुहंतु, अटेंटिव रुहंतु. काहर किछि क्वेश्चंस डायरेक्ट किछि डाउट्स आसिले आमे तांकर आधा घंटा रो टॉकिंग परे आमे डाउट क्लियरिंग सेशन रखिबा. So half an hour, let her say what she has planned to say today. Thank you. Sasmita madam, you can start now. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. Yes. Okay. Hello, everyone. Very good evening to all of you. Today, the webinar topic is special program for promotion of integrated farming. I am directly going to the topic because I have only half an hour and I have to complete all the activities taken care in this scheme specially. I am very much excited to share what I have been working on the scheme special program for promotion of integrated farming in tribal areas. First, we will go to the first slide which shows the objective of the scheme.
Actually, it is a cluster approach program in which there is site-specific landscape-based farming system in which there is integration of agricultural and allied activities for diverse sector, which the optimal utilization of the natural resources by means of reduce, recycle, and reuse, so that there is improvement of the livelihood and income of the farmer through enterprises, marketing, and value chain addition, especially for WSSG and FPOs. This is a cluster and now it is being implemented in 9 districts like Balangir, Kalahandi, Kandhamar, Moyurbhanj, Koraput, Rayagada, Gajapati, Nuapada, and Malkanagiri district, in which we are we have already worked in Malkanagiri district from the year 2016 and 17. After that, from 2020-21, the scheme is being implemented in next 8 districts. We are covering almost 300 GP, which comprising almost 75,000 hectare area and 1,80,000 households. Actually, in a patch 3 GP, which is 1 GP, 600 household we are covering. Then we are going to the roles and responsibility. I have to complete the guideline like in 10 minutes. After that, I was in agriculture, soil conservation, and livestock department, in which WSSG and FPOs are working excellent. What are the role and responsibility? There are 2 committees in the district level IFS committee. The district collector and collector cum district magistrate is the chairman, and the chief district agriculture officer is the member convener. All other district level officers like a deputy director of horticulture, chief district veterinary officer, district fishery officer, PDDA, DPC, Mission Shakti, DPM, OLM, PD, Watershed, KBK scientists of the facilitating agency are the members. The district IFS committee to approve the annual action plan and the intercomponental changes required in any area in any activities. And the sole authority of this program is the DLC committee. As per the committee recommendation, everything can be changed during the implementation year. Then the next committee is the BTT committee. Everyone knows about the BTT committee because we are presently working under the ground level, in which BTT committee comprises of the BTT convener. Who is the BTT convener, ma'am? The block agriculture officer is the BTT convener. Level of horticulture, conservation, district fishery officer, any OLM member, banking sector member, they are the members. And the BTT committee, the main motto of the BTT committee to approve which FA and FPOs presented everything about the beneficiary selection and the activity they are doing at the ground level. In the BTT meeting, they will approve the thing. Then it will be presented in the DLC committee. After approval of the DLC committee, the thing will be implemented in the district. Then the role of the facilitating agency, the FA is responsible for supporting FPO and WSAGs. FPO helps in preparation of plan, documentation, estimate preparation, bookkeeping, accounting, etc. FA also responsible for the financial compliances of FPOs against release program. What is the role of FPO? It develops the business model, raise share capital for business activities. FPO also procure all the materials for the construction work in the agriculture, horticulture, and in the livestock sector. Then we will go to the WSAG. WSAG actually organize the village level meeting, awareness, and disseminate the potential opportunities in the scheme, mobilize the community, and select the potential beneficiaries of different schemes as per the selection criteria prepared in that. Beneficiary selection and indent preparation. Indent for which crop they are planning to implementing in that area, like in coffee mission or millet mission, or in agriculture sector like
horticulture sector like vegetable cultivation or any scented variety of rice, they will place the indent. And the community resource person, gives the village level beneficiary list with relevant document to FA and BTT member. Relevant document means their Aadhaar number. Ma'am? No, you can carry on. Okay. Then the community resource person. Then next. Procedure for selection. Actually, beneficiary selection comprises of two types: individual farmer and the group and enterprise. Individual farmer can be selected by the means of CRP, FA or Krushak Sathi at the ground level, and the HEW, VAW, AFO, LI at the constant block level. Recommended the things to the BTT. After approval of the BTT, the final verification done by the DLC committee in the presence of the chairman, collector come DM, then the beneficiary list getting selected. In the group and selection, actually WSAG has the common criteria and agenda at the Department of Mission Shakti, in which they already WSAG members already they have selected some WSAG members who are getting implemented in the both OMM and SPPIF, Odisha Millet Mission, and special program for promotion of integrated farming. Next slide, please. Please go. Okay, thank you. Then procedure for then the process of procurement. The process of procurement done as per the scheme guideline, where DBT method is not applicable, procurement done by the WSAG or FPOs. Generally, we are giving subsidy to the beneficiary in the mode of direct benefit transfer. But where DBT is not applicable, then procurement is done in the means of WSAG or FPO. As this is a convergence scheme, hence all the agricultural and allied activities are approved by the concerned district authorities. Then the process of expenditure, where incentive released to the beneficiary through DBT mode, and the fund will release to enterprise or a group in 3 phases. That is in 30%, 30%, and 40%. When the beneficiary, when the group start the work, at the initial phase, 30% fund will be released. And after getting 70% of work, another 30%. At the end of the program, they will give a subsidy of 40%. But in case of fishery activity, the fund release at a once. And in means of night shelter, that in case of poultry night shelter or dairy night shelter, then the construction fee given to the beneficiary in 2 phases. First phase comprises of 50%, and the next phase another 50%. Now I will discuss about the different components which are being implemented under the scheme. Next slide, please. First of all, I am going to the agricultural activity. There are actually 32 components in the scheme which are being implemented in 9 districts, and as it is a convergence scheme in which the fund is not present in any department, there is a fund provision from the SPPIF, from Directorate of Agriculture and Food Production. I'm getting into the details. The most important component under the agricultural activity is the crop diversification program, and we can give a subsidy to the beneficiary from the National Food Security Mission, which is being implemented from the Directorate of Agriculture and Food Production, as well as from the Directorate of Horticulture. Irrespective of the crop, we are giving beneficiary 9,000 per hectare for crop diversification. Generally, for crop diversification, we are taking the intercropping by means of the oilseed or pulses. Rather than after rice, they can choose oilseed or pulses or millet or any types of vegetables. If they will take any types of vegetable, then also they will get 9,000 per hectare.
In case of PVT and mass selection, there is no scheme in the agriculture and any allied department. Hence, 15,000 per patch. We are giving subsidy to 15,000 per patch to farmers. And in case of establishment of a mini seed center, there as it is a WSAG or FPO, it is a mass program. Then we are giving 2 lakhs to WSAG or FPO for establishment of a mini seed center. In case of seed production, in case of seed production, there is provision of 5 lakh for WSAG or FPO, and this is from purely from the Director of Agriculture and Food Production. For support of liquid manure, there is a provision of 50,000 rupees. No, as there is no scheme, so we are giving from the SPPF scheme only. For bond plantation, there is a scheme in the National Project on Agroforestry or National Horticulture Mission. Hence, there is no budget provision from our scheme, but there is budget provision from the Horticulture Department. In case of support for establishment of custom hiring center, there is also provision from Mission Shakti Department. They give support for the custom hiring center. Then we will go to the horticultural activities. In case of horticultural activity, irrigation system support for micro irrigation system is the main motto, and so many districts also applying the PMKSY, in which drip irrigation is the famous one. They are giving 70% subsidy in the drip irrigation system, and for SC/ST farmer they are giving 85%, up to 85% subsidy. And in case of trellis system of vegetable cultivation, as there is no scheme being implemented in any of the allied department, hence Directorate of Agriculture Madam, food voice production giving 12,550 rupees. Vegetable cultivation is a system. Hello, No. am I audible? हाँ yes मझिरे टिके वॉइस टा से माइक्रोफोन टा बोधे डिस्टर्ब रहउची टिके पळउची इट्स ओके फाइन यू कैन Okay, ma'am. कंटिन्यू Okay. In case of horticultural activities, the main important scheme is presently being implemented from Directorate of Horticulture is the support for micro irrigation system, in which drip irrigation, so many people getting benefit up to 70% of subsidy in case of micro irrigation. For SC/ST or women beneficiary, it can be exceed up to 85% of subsidy. In case of support for a trellis system for vegetable cultivation, as there is no scheme presently being implemented in any department, hence Directorate of Agriculture giving 12,550 rupees for only 10 cent of area preparation. This trellis system of vegetable cultivation helps the beneficiary to prepare a trellis where he or she can grow the vegetables which are creeper type. Like pointed gourd, tomato, pumpkin, or bottle gourd, the creeper type vegetables, they can grow in a small area. Support for vegetable cultivation, supplied of seed, sapling, fertilizer, and bio inputs from the OLM or MGNREGA, backward kitchen garden, or support to WSAG on bank linkages, MIDH, from Mission Shakti Department. In case of agroforestry model for Adarsh Bagicha, this is a system where there is annual plantation along with the medicinal plants and also fruit trees. This is a Adarsh Bagicha is the most important project in Malkanagiri district, which district collector and DM appraised to circulate that system in whole 30 districts, as it comprises of both perennial crop, annual crop, medicinal plants, as well as the pulses and oilseed. This is a trenching system of agroforestry model where the soil conservation department and horticulture department giving 70,000 subsidy per acre to develop the agroforestry model. And for promotion of a producer group, there is 3 lakhs of subsidy for the SAGs from the Mission Shakti Department. They are comprises of all these system. We are
accommodating everything at the doorstep level in a cluster approach to make this scheme successful, as the state professional agency who is now liaising with the Directorate of Agriculture and Food Production, making it possible, as there is a linkage of so many departments. Hence, there is a state professional agency, WASAN, which is also working in the Odisha Millet Mission as well as in the special program for promotion of integrated farming. According to the livestock activity under SPPIF, there is goat shelter construction where the small goat can stay at the night, and for farmer there is 12,000 rupees, and for inbreed farm there is 1,28,000 rupees from our scheme only, and in case of poultry night shelter there is 3,000 rupees for farm family. Support for poultry vaccine, one time support, there is 3,000 for cluster. We will make the veterinary officer to go to the doorstep and give the vaccine to the poultry. Support for poultry vaccine cold chain management, 12,500 for community. It can be counted as numbers, how many poultry vaccine given to in a cluster manner, in a community basis, and this money directly goes from the Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Science. For breed characterization and livelihood development, there is huge amount of money, that is 16,27,000. As there is no scheme related, hence a person or the group can be take loan from the any banking sector, or another 40% we are providing it from the MKUI, Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana. For large goat shelter, there is the farmer can get subsidy from 49,000 from the DRDA, Nodal Directorate DRDA. For backyard dog rearing, 4,000 rupees from Director of Animal Husbandry and Veterinary Science. For Ajola cultivation, 2,000 rupees. And I am going to the most important one, establishment of the goat rearing unit through WSAG. They are getting 2,30,000. And another 25% top-up subsidy from the SPPI scheme only, 2,30,000 from the Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Science, and another 25% subsidy from the scheme special program for promotion of integrated farming in tribal areas. Then they are getting almost 3.5 lakhs, sorry, to 3.5 lakhs towards the establishment of goat rearing unit through WSSG. And in case of commercial poultry enterprise through broiler farming in deep litter system, they are getting 3,60,000 for WSAG. Fishery activities for support for quality fish seed stocking, they are getting 15,000, as there is no scheme in the fishery department. Then agriculture and farmers empowerment department giving farmer per acre 15,000 rupees per acre. For establishment of nano fish feed mixture, where they are giving 1,50,000 as an entrepreneur or WSAG member. As there is no scheme, they are getting benefit from our scheme only. Support for promotion of indigenous fish species culture, they are getting 90,000 rupees for veterinary department. Input assistance to WSAG for pisciculture in GP tank. Harvesting of marketable fish, popularization of fishery machinery or equipment implement, they are getting 1,20,000 rupees from fishery from Director of Fishery Department only. Then I'm going to the scope for enterprises set up under the scheme. What are the scope for the WSAG and the FPOs? If they will do the bio input center from agricultural sector, then the WSAG member can get 50,000 of rupees direct 50 to start of the program, start of the process. For processing unit, for any agri or horticultural processing unit, for individual farmer, they can get up to 3 lakhs. For broiler poultry unit, they can be provided up to rupees 3,60,000. Or for goat rearing unit, they can get up to 2,30,000. For fish feed mill, the individual or WSAG, anyone can do 1,50,000.
or propose enterprises, what are the enterprises they can establish in the larger term for pulses processing. For pulses for processing unit, the minimum cost for the unit is 5 to 15 lakhs, from which they can get 40% subsidy and 40% subsidy from the Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana, and 50% subsidy for the SC/ST women or physically challenged person. For oil extracting, these are the scheme: oil extracting unit, sunflower, mustard, groundnut or sesame. The minimum cost is 4 to 10 lakhs. The subsidy amount also 40% and 50% irrespective of the category of the beneficiary or the WSH member. Automatic pouch packaging machine, multiple items, 6.5 to 15 lakhs. Tamarind processing unit, 10 lakhs. Spice or turmeric powder preparation, 2 lakhs. Multiple feed preparing machine, 2 to 10 lakhs. DPR shall be prepared and submit to the bank finance. Already district collector district magistrate ensured the bank finance by the DLBC, the district level banking committee, and bank finance can be done at the district level only, and the beneficiary will give only 25% in the beginning, and the rest 50 or 40% subsidy will be deducted from the loan amount, and the rest amount he or she will get at the end. Is that over? Sasmita madam, ଆପଣଙ୍କର PowerPoint presentation ସରିଲା କି? Regarding this scheme or any yes sir, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, sorry. Okay. हाँ हाँ मैडम, थैंक यू सो मच. आपण केते जिनस भितरे विषय कहिले माने एनिमल्स, फिशरीज, पल्सेस, राइस सबू अन्य मानक मु समस्त को पचारिबी, सांगे सांग कहिबे क्वेश्चन गुडा को कहिबे. मोर गोटे क्वेश्चन थिला, आपण फ्लावर विषय काई कहिलेनी? फूल कल्टीवेशन होउनी की? Actually ma'am, एबे जाय ए स्कीम रे ओनली जो जो कंपोनेंट अछि हम सेटा कहिचु, किंतु सस्मिता मैडम, मते लागुची नेटवर्क टा स्लो रहूची बोली वॉइस टा ब्रेक हेकिरी आसुची, या तो फिर आपनकर माइक्रोफोन टा टिके ठीक से कनेक्शन हेइनी बोधे. सो जस्ट चेक इट वंस अगेन. हेलो 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 मिस्टर ओम, हेलो मिस्टर ओम प्रकाश, सस्मिता मैडम लाइन रे अछंती? नहीं नहीं से तो कटि गलेनी, आउ थरे रीजॉइन करूछन. ओके ओके. ओके तांकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टा शेयर करबा को लोक रिक्वेस्ट करचंती पार्टिसिपेंट्स, तो तेणु सेटा को केमती तांका पाखरु समस्त को पाखकु जीव सेटा टिके देखिबा. आगे आगे. Yes, Sasmita madam, continue please. मैम किछि भी डाउट अछि को स्कीम रिलेटेड? एक्चुअली ए जो स्कीम अंडर रे हमर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, सॉइल कंजर्वेशन, फिशरी ए सब एक्टिविटी गुडा को इंक्लूड करा हिचे क्लस्टर अप्रोच रे. एक्चुअली एटा प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये थिला एमती गोटे स्कीम हो जोथरे की पूरा माने सब जिंसर पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज होउथबो, गोटे एरिया रे सब लोक मास रे डेवलप हे पारुथिबे. हमर अलगा स्कीम भी अछि जोटा कि आपण इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को पई अछि. सेथिरे फॉर जनरल बेनिफिशियरी अछि अप टू 1,37,000 सब्सिडी,
आउ जनरल माने जनरल मेल मानक पई किंतु वोमेन SC ST आउ WSHG एमानक पई अछि 50% सब्सिडी जोटा कि अछि 1,71,000 अप टू सेटा होछि इंडिविजुअल जोटा कि 30 डिस्ट्रिक्ट रे चलछि मा किंतु जेहेतु एई टॉपिक ता आज सिलेक्ट हेतिला कि एई टॉपिक ऊपर कहबार थिला तो जहा एई टॉपिक ऊपर थिला मु ता ऊपर कहिछि तो जदी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अलगा स्कीम अछि मिलेट मिशन हो किबा आपनकर NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो आपनकर बलराम स्कीम हो किबा आपनकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम हो ओइपिक्रा हो किबा MKUI हो जो भी स्कीम रिलेटेड जदी आपन मानकर किछि भी थिबो त सेटा आ गोटे अलगा टॉपिक हे परिबो किबा किछि डाउट हेले मते पचारले समस्त पाखे मो नंबर अछि जदी काहाकू भी पर्सनली किछि भी दरकार थिबो मते एनी टाइम कांटेक्ट करि परिबो आज रो मीटिंग रे जदी किछि डाउट अछि मु कहिबे जदी आउथरे सम अप कर देबी कारण बहुत सारा कंपोनेंट थिला मु भाबिली कि टाइम हबनी तो मु सब कंपोनेंट करिया रे कहि देली तो आपण मानकू जेमति भी आपण माने कंफर्टेबल मते एनी टाइम आपण कांटेक्ट करि परिबे ମୁଁ एनी ଟିକେ हेल्प आई ପଚାରି कैन डू आई ଦଉଛି विल बी Yes. Yes. ओके From the listeners, from the participants, କାହାର କିଛି doubt ଅଛି ଯଦି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କାହାର କିଛି doubt ଅଛି ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ मैडम गुड इवनिंग मो कथा सुना जाउची Yes, yes, you are completely audible, sir. या सस्मिता मैडम को गोटे क्वेश्चन जे जेमति कहले कि the whatever schemes he described that is being implemented in 9 districts. We have got total 30 districts. Number one question is what about the other districts? Number one. actually sir हाँ मो नंबर 1 आंसर देली सर एक्चुअली जेहेतु ए जो स्कीम टा ट्राइबल कम्युनिटी ऊपर ही कंसंट्रेट करा जाईची तो जो डिस्ट्रिक्ट रे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज आर प्रेजेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटा गोटे पायलट बेसिस रे सेही डिस्ट्रिक्ट मानु को निया जाईची आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम आफ्टर 25-26 इन द फाइनेंशियल 25-26 we will implemented in the whole 30 district. Okay, good. Thanks madam. Okay, बढ़िया Great. सर मु भी आपण को भलिया पचरिया को जाउथिली मो गां बापघर गां सासुघर गां अलगा अलगा जगह रे सेटा तो ए बलांगीर बेल्ट रे नाही तेनु ना, हम के कोन फायदा पाइबा मु भी सेटा आपण इंडिविजुअल मैम आपण इंडिविजुअल IFS मॉडल रे बेनिफिट पाई परिबे मैडम आ गोटे छोटो क्वेश्चन अछि मैडम पचारंतु सर आपण जो the beneficiary will get this much of exemption or additional benefits from the government might be 2,30,000 1,70,000 something like this, but at the same time somebody has to tell or people need to know कि what is the tentative total project cost. Maybe project cost is 10 lakh and you are giving from the government 2 lakh 30,000. Sir, anytime. सस्मिता मैडम सुनी पारिले हेलो हेलो मैडम करो टिके कनेक्शन डिस्कनेक्ट हेची बोधे हाँ 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 वो मत लागुची सर आपण एया कहिया को चाहचंती कि लोक सिना जानिले कि एटा 10 लाख हबो कि 15 लाख कॉस्ट हबो तार 70% गवर्नमेंट देले 30% से माने क्लस्टर हिसाब रे 30% को कंट्रीब्यूट करिके कले कामटा आरंभ करि परिबे से दिन exactly otherwise local they are unable to appreciate the amount of subsidy the government is giving. Exactly ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा गवर्नमेंट एबे स्टार्ट करिछि एपटे भुवनेश्वर रे भी बहुत सारा एमती सब प्रोग्राम चलीछि एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट कारण गवर्नमेंट गोटे मेजर स्टेट गवर्नमेंट आ सेंट्रल गवर्नमेंट से माने शेयर करूचंती गोटे भलो बड़ फिगर टे ता दिए क्लस्टर रे 30 जन लोक जदी पसुचंती कि 20 जन लोक पसुचंती समस्तकर इक्वल शेयर रहइबो बाकी 20 कि 30% रे so that the production will be definitely good. गोटे लोकर contribution आ गोटे team रो contribution भितर there is definitely some differences there. Sir, hello.
हेलो Yes, मैम yes, सॉरी एटा हाँ डिस्कनेक्ट हो जाउथिला हां हां मते हाँ आंसर दबार थिला हां सर एक्चुअली जो मो अमाउंट कहली से माने सेही सब्सिडी अमाउंट ता गवर्नमेंट रु ही पाइबे एक्चुअली मु जो आपन को जो स्कीम रे टिके बेसी लार्ज अमाउंट रो अछि जेमति कि मो लास्ट स्लाइड रे जदी कहबे मो ए स्लाइड ऑलरेडी ओम सर को सहित शेयर करिछि से ताको ग्रुप रे शेयर कर देबे आपण देखिबे जोउथिरे लार्ज अमाउंट रो रतन मैडम बोधे सुस्मिता मैडम को टिके कनेक्शन प्रॉब्लम रहिला हाँ yes, yes. ଆମ ପାଖରେ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ ଟେଲିଫୋନ ଅଛି ଆଉ ସେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫିସ ରୁ परसेंट जाय सब्सिडी हमें ताको देउछु आ तापर बैंक सहित तार लिंकेज करा जायछि कि से माने केमती इजीली बैंक रो फाइनेंसिंग करि परिबे थैंक यू मैडम ग्रेट थैंक यू ग्रेट सस्मिता मैडम मु सेया भाबुथिले कि आपण हेलो सब हेलो गुडा कवर करले जो गुडा को आपनकर देखुचंती सस्मिता जो मैडम अमाउंट आपण अछि तो से गुडा को हां हेलो नो कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन हाँ मैम एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम आई डोंट नो काहे माने जूम रे केबे मीटिंग निए नी जेतबे ने माइक्रोसॉफ्ट टीम रे निए काहे जानि जूम रे ते इशू होसी আজি किंतु जहां भी सांकर डाउट थिला कि हमें जो एतिकी अमाउंट कहूछु एटा हमें गवर्नमेंट रो सब्सिडी दिया जाउची केबे भी 100% सब्सिडी गोटे जगह रे एगुडा को होउची जेमति कि पर क्लस्टर दिया गला गोटे प्रोसेसिंग यूनिट गोटे क्लस्टर रे 100 हेक्टर आसिला तो 100 हेक्टर एरिया रे जोटा भी सेटा यानी कि पल्स हो किबा ऑयल सीड हो जहां भी प्रोडक्शन होउची मैडम तारो प्रोसेसिंग हबो ठीक अछि तो सेटा जण माने जे भी करिला माने केवल ता जमी रे जोटा होउची ताको प्रोसेसिंग करिबो पूरा सेही 100 हेक्टर एरिया रे जति कोची तारो प्रोसेसिंग कला तो सेटा होउची तारो परमानेंट सेटअप हे गला गोटे सेही ईयर पई ताको दिया गला सेटा किंतु सेटा से फ्यूचर रे सेतिरो प्रोसेसिंग करकी से तार इनकम डबल करि परिबो एई जो जिंस करा हेची एटा करा जायछि कि सेही एरिया को सैचुरेशन करे पई जेहेतु एटा ट्राइबल कम्युनिटी को माने ये करा जायछि कि सेमानकर केमिति लाइव माने लाइवलीहुड को इंप्रूव करई हबो कि सेमानकर जोटा प्रोसेसिंग यूनिट गुडा को परमानेंट स्ट्रक्चर माने एटलीस्ट 10 इयर जाय से गुडा को चलिबो विदाउट माने तार गारंटी अछि मेंटेनेंस रो तो वंस थोरे एस्टैब्लिश हे गला तापर से माने 10 इयर जाय बेनिफिट पाइबे आउ रहिला कि अन्य जो गुडा को अछि जेमति कि लार्ज स्केल माने ये अछि कि जेमति कि आपनकर ड्रिप इरिगेशन नेबे ड्रिप इरिगेशन के गोटे एकर को नियनि तो सी जदी नबो केते 1000 हेक्टर एरिया को भी माने प्रोवाइड करा जाउची कि जते बेले हमर एटा रेनफेड एरिया रे जदी हे गला वर्षा सब बेले जेतु क्लाइमेट चेंज होउची सब एरिया रे सब टाइम रे होउनी वर्षा तो जो टाइम रे वेजिटेबल कल्टीवेशन रो केतेरा लाइफ सेविंग इरिगेशन दरकार जदी हमें सेटा ड्रिप इरिगेशन थिबो आपण देखिथिबे नुवा पडारे एथरो बहुत भलो स्ट्रॉबेरी हेची तो सेई जो नुवा पडारे स्ट्रॉबेरी हेची तार जो भी इरिगेशन अछि आपण म्यूट हे गले आज्ञा हेलो हां एबे ठीक अछि हाँ 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 तो जोटा कि स्ट्रॉबेरी रो जोटा भी कल्टीवेशन अच्छे सेठी से जो पीएमकेएसवाई अंडर रू ड्रिप इरिगेशन दिया जायछि जोथरे कि स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन एथरो बहुत भलो हितला तारो शॉपिंग भी Amazon और Flipkart रे भी अवेलेबल मिलुथिला किछि दिन पई आउ सेटा मार्केट को भी आसीथिला और तारो टेस्ट भी बहुत भलो थिला माने जनरली दिल्ली रे जो स्ट्रॉबेरी मिले मु तारो टेस्ट करछि तारो माने सेमति गोटे टेस्ट नथिला किंतु एटा खट्टा मीठा टेस्ट थिला एबे किवी प्लांटेशन चलछि किवी रो केमति प्रोडक्शन हबो किबा ड्रैगन फ्रूट हबो फ्रूट माने एमती करा जायछि किंतु आपण जेमती कहले फ्लावर पई ए स्कीम अंडर रे किछि नाही एबे किंतु आमे निहाती नेक्स्ट ईयर केमती फ्लावर करिकि एक्चुअली मैम फ्लावर कल्टीवेशन रो ओनली गोटे जिंस होउछि कि तारो मार्केटिंग ओके खाली आमे जदी तारो प्रोसेसिंग यूनिट न बसई परिबा फ्लावर रो ऑयल एक्सट्रैक्शन न करि परिबा जनरली फ्लावर इंडस्ट्री काहे कि चलछि माने सेंट हो परफ्यूम इंडस्ट्री हो ए गुडा को पई चले जनरली ओडिसा रे सेई जो माने प्रोसेसिंग यूनिट गुडा को एते खोलिनी जेमती शीतल भंडार गोटे प्रॉब्लम अछि सेमती प्रोसेसिंग यूनिट रो गोटे प्रॉब्लम अछि
तो आमे खाली प्रोडक्शन जदि चाषींकर करदेबा आ ठीक से मार्केटिंग करई परिबानी देन चाषी माने केबे भी आ सेकंड टाइम आम कथा सुनिबेनी किंतु एबे जो एंटरप्राइज हाँ। एबे जो एंटरप्राइज निया जाईची एगुडा को मार्केटिंग हेई परुची से माने बेनिफिट पाउचंती वंस से माने सेटल हेई जिबे देन आमे तांको नुवा प्रपोजल फ्लावरिंग पई छोटो छोटो पैच रे आमे तांको ये करई परिबा मैडम मोर नोन रे मोर जने बहुत परिचित लोक से ऑर्किड फार्म करचंती टुवर्ड्स खोर्धा बांकी पटरे ऑर्किड फार्म करचंती आउ तांकर ऑर्किड टा दुबई जाउची हाँ, कारण सेया। सेगुडा डेकोरेशन पाई का रहूची हाँ, बहुत हाँ, flower डिमांड गुड़ाक, तो हाँ। ऑर्किड फ्लावर का जाउची हम्म। जाउची सेमती हमर तो एमिति रे भी पूजा फूल भी गेंडू फूल भी हमर बहुत दरकार होची घरे घरे एटा पूजा रे लागुची आउ सब प्रकार सेलिब्रेशन रे एटा लागुची आउ सेथि पाई का पचारथिली बट एनीवे हम बहुत नहीं खुशी एक्चुअली लागला मैम आपनकर फ्लावर कल्टीवेशन पई अलगा स्कीम अछि आपण मते हम्म। पर्सनली पिंग करिवे मु से स्कीम अंडर जदि से माने करूचंती कोन बेनिफिट पाई पारि मु आपन पर्सनली कहि परिबी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सेमती फ्लावर कल्टीवेशन पई तार स्कीम अछि किंतु एई स्कीम टा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो एटा को कन्वर्जेंस रे जेहेतु कराई छै जो गुडा को बेस्ट प्रैक्टिस जोटा कि इजीली माने तांको माने मिली परिबो सेई माने एंटिटी गुडा को रखा जाई छै फ्लावर आउ गोटे क्वेश्चन मैडम आपण ना एटा ट्राइबल एरियाज रे एई स्कीम गुडा को क्लस्टर डेवलपमेंट एक्टिविटीज गुडा को करूचंती हमर तो हाँ। ट्राइबल माने इट्स अ जनरल लाइक मोर क्वेश्चन टा आसुची जे से माने जेहेतु पढ़ा लिखा रे एते ऊपर को जाई पारि नहांती तांकू आपण माने केमिति कन्विंस करूचंती सो पंचायत सरपंच एरिया रे जाई करी तांकू कन्विंस करूचंती कि कारण तांकू बुझेइले तो से पुनी बुझी करी काम करिवे कारण से माने परिश्रमी जाति सेमाने परिश्रमी जाति तांको थरे बुझेई देले जिनसटा को सेमाने नेई आनी तोई परिबे किंतु तांको बुझेइबाटा ही गोटे बड़ टास्क बोली मु भाबुची मैम एक्चुअली मु फास्ट जो कहली जेतले थिले आपण सिलेक्शन रे देखिथिबे हमर ग्राउंड लेवल रे सीआरपी काम करूचे जोटा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन रे से लोकल एरिया रो जो माने वार्ड मेंबर अछंती सरपंच से माने जाउचंती तापर हमर फास्ट ऑफ ऑल मु कहि रखुची एई जो स्कीम टा इंप्लीमेंटेशन होबा पई एथिरे गोटे माने स्टेट लेवल प्रोफेशनल एजेंसी वासन को दिया जाईची जे कि तार स्टेट लेवल रे एसपीएमयू अछि और डिस्ट्रिक्ट लेवल रे डीपीएमयू तार भी सब वर्कर अछंती लिएजनिंग करिबा पई तो आपनकर जी हेलो मैडम लिंगराज पाणिग्राही कहूची परला कमिटी गजपति हाँ सर मो टिके इटा टिके कंप्लीट कर दी लिंकटा हम तो गजपति ग्रुप रे छु आज्ञा हेलो सर म्यूट हे गले आपण अनम्यूट करी कोहंतु हेलो सर अनम्यूट करी कोहंतु गजपति नगर रु कोन कहिबा को चाहुतले कुहंतु मैम किसी ठीक से सुबह जाओनी हाँ आपण आपण सस्मिता मैडम यू कंटिन्यू योर हाँ, आंसर तो- कहिबा हाँ 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 सीआरपी जो अछंती से माने बेनिफिशियरी सिलेक्शन करिवे आउ जेहेतु एटा पैच रे हुए तो गोटे माने गोटे पैच रे हमर आसी जानती अराउंड 600 हाउस होल्ड आसंती हाउस होल्ड बाबा माने फैमिली ओके हाँ फैमिली आसे जेहेतु आमे एथरे 300 टा पंचायत रखिचे जोथरे आमे 75,000 हेक्टर को ये करूचे आ 1,80,000 हाउस होल्ड फार्म फैमिली एथरे बिलोंग करिवे तो एटा पूरा क्लस्टर अप्रोच रे होउची फास्ट है कि आपण कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जे से बेनिफिशियरी सिलेक्शन करिवे से माने एफपीओ को देबे से जो एटा सेमानक सहित सेमानकर जीव सेमानकर आधार कार्ड जीव सेमानकर सेमानकु आगे फार्मर आईडी क्रिएट हबो जेहेतु सेमाने डीबीटी रे पैसा पाइबे तापर सेमानकर जो लिस्ट हबो बीटीटी कमिटी हबो जोटा बीटीटी कमिटी ब्लॉक लेवल ऑफिसर माने थांती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो जे हेड अछंती ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से तार कन्वेनर और अन्य डिपार्टमेंट रो जो सेतिरे हमर रहउचंती हॉर्टिकल्चर सॉइल कंजर्वेशन वेटरनरी बैंक ये भी रहउचंती जो धर हमर फाइनेंस करिया पई तो हमें सेही बैंक को पठाउछु जोटा लोकल रे जो बैंक ता सहित कनेक्ट होउची तो सेमानको पाखो को पठा जिवो सेमाने स्क्रूटिनी कला पर सेटा को डीएलसी कमिटी को पठा जाय डीएलसी कमिटी रो चेयरमैन हेले कलेक्टर हेले चेयरमैन कन्वेनर हेले हमर चीफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर माने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रे जे हेड अन्य माने पीडी डीआरडीए डीडीएच हॉर्टिकल्चर माने वेटरनरी समस्त हेले
मेंबर ठीक अच्छे तो आमर से एरिया रे जहाँ भी हुए जिते नंबर जमी कि मैडम आमर धर क्लस्टर रे प्रोसेसिंग यूनिट धर 8टा प्रोसेसिंग यूनिट हम ठीक अच्छे तो आमर डिपार्टमेंट रु धर 3 लाख टंका लेखा मिलला माने आम डिपार्टमेंट रु पैसा बाकी पैसाटा से माने केमिति करि परिबे बैंक फाइनेंसिंग हबो पूरा कलेक्टर को पाखक समस्तंकर जीव कॉपी सेइठु डायरेक्ट से मानकु ऑर्डर जीव कि ए मानकु फाइनेंस करा जाऊ तो सेथि पई तांकर फाइनेंसिंग रे केबे प्रॉब्लम होएनी जेहेतु एटार माने कन्वे माने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी रे एटा अप्रूव हुए तो सेथि पई सेथरे किछि प्रॉब्लम हुएनी जनरली डब्ल्यूएसएसजी एपीओ माने एगुडा को करंती सेथि पई आपण जानिचंदे डब्ल्यूएसएसजी और एपीओ मानकु अन्य स्कीम रे भी बहुत सारा मिशन डिपार्टमेंट रु कन्वर्जेंस रे भी तांको बहुत प्रकार ये मिले तो सेटा सेथि पई लार्ज माने गोटे क्लस्टर अप्रोच रे हेई पारे आउ जोटा कहले कि गेंडू फूल हो कि कट फ्लावर हो हाँ सस्मिता मैडम मु बुझी से गली फूलटा जे actually- आपनकर एटा थ्रू प्रॉपर प्रोसेसिंग रहूची तांको कन्विंस करी proper तांकर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं से जिनसटा प्रोसेसिंग हेके तांका पाखकु केमती ऑन टाइम किस्ती हिसाब रे पैसाटा जीवो से माने फार्मिंग करी किरी हमें एंश्योर बाहर करू करी किरी मार्केटिंग रे हेल्प करी किरी मार्केटिंग करी अगेन तांकू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन करेबारे आपण मानकर बहुत हाथ रहउची आउ एटा भी बहुत खुशी लागला जे जो एक्सोटिक फ्रूट गुडा को स्ट्रॉबेरी हो कि ड्रैगन फ्रूट हो एगुडा सब भी आपण तार प्रॉपर सीडिंग करी ताकू तार न्यूट्रिशन तार फर्टिलाइजर को सर्वे करी तार माटी को परीक्षा करी आपण सेगुडा भी आरंभ करचंती आउ मेन कथा हला आपण मानकर जो एटा एफर्टटा रहउची जे हमर ट्राइबल एरिया टा बहुत जगह रही ओडिशार माटीटा ट्राइबल एरिया रे बहुत अच्छी जदि आमे सेठू किछि हमर उपजाऊ जिनसटा को आमे नै परिबा आम देश पाइका आमे बहुत बड़ सहाय्य करि परिबा तेणु एटा जदि आपण मानकर ए एग्रीकल्चर टा जो डिपार्टमेंट फॉर ट्राइबल एरियाज डेवलपमेंट करूची माने दिस इज रियली वेरी कमेंडेबल एंड वी आर सो थैंकफुल आमे खाली भाबुजु कि से ट्राइबल एरियाज रे एटा सीमित न रहू एटा आम पटे एपट जाऊ मु रहे हाँ एटा भी जगसिंहपुर प्रपोजल हाँ मु जगसिंहपुर एरिया रे रहे हमर सेपटे पानी रो किछि असुविधा नाही कारण केनाल जाईची पानी रो हमर बहुत भलो मैम सुविधा आपण मु आपण को सजेशन देबी आपण इंडिविजुअल आईएफएस मॉडल गोटे क्रिएट करंतु आपनकर जदी 2 रु 2.5 एकर जमी अछि आपण जने बेनिफिशियरी हेई परिबे ता अंडर भी आपण नै कि आपण जो अछि कल्टीवेशन क्रॉप कंपोनेंट अछि सेति बिरे बहुत भलो अमाउंट रो अछि 40,000 माने 2 एकर 2.5 एकर पे 40,000 जाय रुपीस मिली परिबो आपण एनी टाइप ऑफ कल्टीवेशन आपण जदी सेति वेजिटेबल कल्टीवेशन करंतु मिलेट करंतु किछि भी कल्टीवेशन पई अछि किंतु सस्मिता मैडम ए परिबे ब्राह्मण जाति मानको किछि मिलुनी ब्राह्मण मानको किछि नहीं 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 मिलुनी मैम एमती किछि नहीं ओमेन मानक आउ ब्राह्मण सेमती नहीं एथरे जनरल ओमेन मानक पई समस्त को 50% सब्सिडी आमे सेति पई एथरे अच्छा। भेदभाव करिनु जेतु ओमेन एम्पावरमेंट हबा पई एटा होची गोटे ये करेक्ट तो जनरल रो correct. ओमेन मानक नारे पकई परिबे आउ जेहेतु हमरो एठी प्राय एटा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रे केबे भी गोटे आइदर माने ससुरंक नारे थिबो बापांक नारे थिबो से पुओ को जाय केबे बोहू पाखो को जायनी तो सेथि पई केमिति जने बोहुटे नेई परिबो सेथि पई जदी तार हस्बैंड को नारे जमी थाउ किबा ससुरंक नारे किबा बापांक नारे थाउ हेले भी ताकू आमे बेनिफिशियरी करि परिबा ता निजो नारे जमी थिबा किछि दरकार नै से लीज रे नै कि भी करि परिबो एटा गोटे बहुत भलो जिंस कहले एटा गोटे बहुत भलो जिंस कहले आज ये पार्टिसिपेंट्स रे जेते वुमेन जॉइन करिसेंती एटा डेफिनेटली समस्त को गोटे मोटिवेशन दबो जे समस्त गाँ गंडा रे जमी बाड़ी कहा कहा ना रे अछि जदि आमे किछि सेठी करी किरी हमर निजर सेही एरिया रो लोक मानकर भी एम्प्लॉयमेंट देई परिबा आठु भल बड़ कथा किछि नाही बहुत भलो आउ कहार किछि क्वेश्चन अछि जदि पचारि पारंती गजपति रो सर किछि हां Any questions from anyone? मैडम नमस्कार मु अनगुल रु कहतली आपनकर गोटे हां आपन गोटे फीड प्लांट पई गोटे स्कीम अछि सीड प्लांट फीड पोल्ट्री या फिशरी फीडिंग पई पोल्ट्री फीड आज्ञा तो सेटा केमिति अप्लाई करा जिवो कोठी अप्लाई करा जिवो
सर आपण एई स्कीम अंडर रे तो आपण अप्लाई करि परिबेनी कारण आपणकर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट आ अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रे स्कीम ता होउनी आपणकर Okay. जो ब्लॉक रे वेटरनरी ऑफिस थिबो किबा जदि आपण अनुगुल रो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रे भी रहउथिबे देन आपणकर सेई जो कंसर्न सीडीओ ऑफिस हो जाई कि माने सीडीवीओ ऑफिस जोडा चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस जोडा सेठी जाई कि आपणकर जहां भी दरकार आपण कहिले एबे प्राय सब ऑनलाइन अप्लाई होउची सर तांकर किछि निहाती पोर्टल थिबो जोथिरे आपण अप्लाई करिवे हमर जेमति इंडिविजुअल आईएफएस पई स्पेशल पोर्टल अछि माने एनआईसी रो गोटे पोर्टल अछि आईएफएस ऊपर निहाती तांकर भी गोटे पोर्टल अछि सर आपण टिके सीडीवीओ ऑफिस रे कांटेक्ट करंतु कारण अनुगुल रे एथि पई एई स्कीम अंडर रे किछि माने अप्लाई करि परिबेनी अच्छा मैम ये जो गोट रेयरिंग वाला हाँ सब माने आपण देखंतु लाइफ स्टॉक एक्टिविटी जहां भी तारो स्कीम रो जहां भी आपण अप्लाई करिवे वेटरनरी डिपार्टमेंट रे सर जेहेतु वेटनरी ऑफिस ता तो सेठी अनुगुल रो माने सीडीओ ऑफिस पाखरे ही अछि तो आपण जाई कि सेठी माने ताको कांटेक्ट करंतु किंबा सेठी आपनकर ब्लॉक लेवल रे जे ऑफिसर रहନ୍ତି वेटनरी ऑफिसर रहନ୍ତି कांटेक्ट करंतु नले मते जदी आज्ञा। जदी आपण निजे जाई कि न करि पारछंती मो पर्सनल नंबर रे टिके वर्किंग डे रे पिंग करिवे तो अनुगुल रे जे ऑफिसर अछंती मो तांकोटू केमति वेब कहि कि मो आपनको देई परिबी जहा टिके वर्किंग डे रे ही मो तांको करि आपनका नंबर ता मैडम 9438 से शेयर कर दियंतु मैडम आपण टाइप करी के स्क्रीन रे शेयर कर दियंतु समस्त नोट कर Okay. लेबे या तो फिर ये ओम प्रकाश सर दे देबे ओसीएफ ऑफिस हाँ रो हाँ ठीक अच्छे हाँ से मु पावर से पॉइंट ग्रुप रे प्रेजेंटेशन सांगरे हाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सांगरे ही कैन ऐड योर Okay. कांटेक्ट नंबर एंड सेंड ओके ओके हाँ आउ पीपीटी टा भी शेयर कर देबे जदी काहा को किछि डाउट कारण एते जल्दी जल्दी रे जदी काहा को पछरे किछि डाउट हुए कि सेतरे कोन केमती मते पर्सनली भी माने पिंग करि परिबे तो मु थैंक यू सो डेफिनेटली मच तार रिप्लाई थैंक यू सो मच Okay. सस्मिता मैडम आपण आ गोटे कथा कहिथिले जे आदर्श बगीचा बालकनी किचन गार्डन एगुडिको करबा पाइका हमरो किए से एठी अर्बन एरियाज रे हमें काहा को कहि परिबा कि सुनंतु किचन गार्डन रो जेमति कि काली अछि किचन गार्डन डे रो गोटे अछि हमरो शहीद नगर ऑफिस रे जोटा कि अच्छा। प्रियंका मैडम हाँ से करिवे तो आपण सर मैडम होची हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किचन गार्डन ऊपर तार स्कीम अछि जदि आपण भुवनेश्वर रे करिवे तो डेफिनेटली मु आपनको पर्सनली मते पिन करिवे मु तो माने जेतु कृषि भवन रे ही डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर अछि ता स्पेशल जहां भी दरकार लिंकेज मु सेमानोठ आनी के आपनको शेयर करि परिबी आ अरे आदर्श वाह। बगीचाटा जोटा होउची जोटा आदर्श बगीचा अछि तो आदर्श बगीचाटा एमती करा जायछि से जो माने एनुअल पेरेनियल प्लांट रहिबो सेतिरे माने आपण मैंगो नै परंती कैसियो नै परंती ता सहित पूरा जेमती आपण जाइथिबे केरला स्टाइल रो प्लांटेशन हेइछि सेतिरे आपण ता साइड रे ता तळे तळे अदा रो गोटे अदा किबा सपुरी जाइथिबो मेडिसिनल प्लांट लागुची स्टीविया लागुची बुझचंदी माने सब डिफरेंट ये रो माने आपण लाइट रो ठीक यूटिलाइजेशन हेई पल्ला भलिया माने माने सबु तांकर सेमती हाइट अनुसार बडरु सान क्रम रे गछ लागे जो आउ इंटरक्रॉपिंग भी सेठी केतले हरड बुणी दिया जाय जो फांका एरिया हैला एमती करा है कि से बगीचाटा प्लांटेशन हेची आउ ता चारि पटे ट्रेंचिंग करा हेची केनाल टाइप रो ट्रेंचिंग कि जदी वर्षा पानी आसी कि ता साइड रे जमी की रहिबो बुझचंदी जोटा कि परे जते बेले माने वाटर स्कार्सिटी टाइम आसीबो तो से टाइम रे से माने से वाटर को यूज करि परिबे तो से मॉडल टा मालकानगिरी रे बहुत फेमस हेइतिला मैडम तो तांकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जे सी हमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर लिखिथिले थ्रू प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट तापरे समस्त जाके विजिट कला परे रियलाइज कले कि ना ई जिंसटा रियली बहुत भलो जिंस एटा सब ट्राइबल एरियाज रे होबा कथा तापरे 9टा स्कीम रे इंप्लीमेंट करा जायछि आगुरु 5टा डिस्ट्रिक्ट रे थिला एई वर्ष आउ 4टा डिस्ट्रिक्ट रे करा हिचे आदर्श बगीचा आउ जदी माने मु एबे जाय सीरियसली मु एबे जाय सेठी के विजिट रे थरे भी जाई परिनी से वर्क प्रेशर हो किछि भी मु केबे जीबी विजिट रे मु डेफिनेटली तार फोटोग्राफ आनी के ग्रुप रे शेयर करबी आउ शेयर हाँ आउ जदी शेयर भी करो केबे हाँ जेबे भी मालकानगिरी जानती आपण देखिबे चित्रकोंडा एरिया जोटा पई कि समस्ते पूरा एते ता ऊपर गोटे मूवी आस्तिला किंतु से चित्रकोंडा एरिया रे एसपीपीआई रो बहुत एक्सीलेंट काम होईची आउ सेठी आदर्श बगीचाटा देखिबा पई माने इवन बाहरु भी लोक आछंती माने बाहर येरो माने इंटरनेशनल ये तार पब्लिकेशन हेतिला तो तार बहुत वेरी डिमांड गुड अछि ना तो केबे भी मालकानगिरी गले डू ए विजिट टू आदर्श बगीचा दैट्स सो नाइस ना एग्जैक्टली एगुडा को सब मोटिवेशन दबा हमर हाँ एंटरप्रेन्योर्स आउ मानन को
ଥରେ ଏଥିରେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇम ବି ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି ବହୁତ ସାରା WSHG ମେମ୍बर ଯେମିତି କି ଓଡିଶା ମିଲେଟ ମିଶନ ରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ WSHG ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଲେଟ କ୍ୟାଫେ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଇଏରେ ମିଲେଟ କ୍ୟାଫେ ହେଇଗଲାଣି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ତ ଆମେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ହଁ ହଁ ତ ସେମିତି ଏମାନେ ସବୁ WSHG ଆଉ ଏପିଓ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଏଇଟା ହେଇପାରୁଛି ତ ସେମାନେ ଥରେ ସେଥିରେ ପଶିଗଲା ପରେ ଥରେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥ୍ରୁ ମାନେ କେମିତି ବି ହଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କ ସବସିଡି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଅଛି ଯଦି ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଲି କରିବେ ଦେନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦବା ପାଇଁକା ଆମର ଖାଲି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଆସନ୍ତୁ କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତାର ସବୁ ସୁବିଧା ଉଠେଇବାର ଅଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗଜପତି ନଗରର ସାର୍ ଆସିଲେଣି କିଛି କହିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଶୁଭୁଛି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଷୟ ଏଇ ବିରତ ଫାର୍ମିଂ ଗଜପତି ବଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ହର୍ଟିକଲଚର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ଆମେ ହର୍ଟିକଲଚର ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କମଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ସପୁରୀ ପଣସ ଜିନିଷ ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନି ମ୍ୟାଡାମ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲ୍ଚରରେ ସାର୍ ଆପଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଟିକେ ପାଟି ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ରଖିଲେ ଲିପସିଂ ରୁ ଜଣା ପଡିବ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଭଏସ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଫୋरहेଡ ଟା ଦିଶୁଛି ଆପଣ ପାଟି ପାଖରେ ରଖିକିରି କୁହନ୍ତୁ ତ ଭଏସ ଟା ଜମା କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଶୁଭୁନି ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ गजपति नगर सर सस्मिता मैडम से मते लागुची मैडम तांकर जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी जब भी सर माने बाय चांस एबे ऑडिबल हेलेनी किछि भी क्वेश्चन आपण तांको पचारियो न तांको कहबे मते पर्सनली फोन करी कथा हिजो जेतल मते लागुची से ट्रैवल करूचंती से गाड़ी रे थिला बळे मते फील होउची से आप माने ट्रैवल करी सारला परे मते मो नंबर रे कांटेक्ट करके पचारि परिबे मो नंबर ता देई देबे काइंडली ग्रुप रे जो माननकु तो किछि भी डाउट अछि मु तो अछि सेति पई ही डिपार्टमेंट रे कि समस्त डाउट क्लियर करि परिबे तो मते किछि प्रॉब्लम नहीं आपण देई देबे से माने जदी भी मु केबे उठेई न परिछि मते WhatsApp रे पिंग करि देबे मु जतले टाइम पाइबे मु बैक कॉल करिबे डेफिनेटली कॉल करिबे so nice of you so kind of you Sasmita madam so nice of you and you explained so nicely about the cluster development program and the recycle reuse reproduce theme and you spoke about the officers related to that particular place district collector magistrate deputy director horticulture department and को माने आ भितर अछंती जो माने ऑफिस दिनसटा को प्रोसेसिंग करैबे लोकन को सहाय्य करिवे ट्राइबल एरियाज रे तापरे आपण ड्रिप इरिगेशन विषय रे कहिले 70% डिस्काउंट 70% हेल्प मिलुची women को 85% जाए हेल्प मिलुची जदी ड्रिप इरिगेशन रे से माने जाईकरी किछि काम करूचंती तो तापरे आपनकर 32 कंपोनेंट्स विषय रे आपण एक्सप्लेन कले आपण बहुत प्रकार वेजिटेबल्स रो क्रीपर टाइप रो किचन गार्डन OLM MIDH आदर्श बगीचा ए विषय भी टिके आपण समस्त को बुझेई देले ता छडा आपनकर पोल्ट्री रो वैक्सीनेशन गोट रेयरिंग आउ फिशरीज रे भी विषय कहले दो फिशरी आपनकर इंक्लूडेड नुए किंतु तथापि आपण फिशरी डिपार्टमेंट रे भी आपण हेल्प करचंती बोली कहले आउ ए नानो फिश पेड रो विषय रे भी आपण किछि कहले एतिक आउ आमे खाली अपेक्षा करिचु जे एटा खाली सेही ट्राइबल बेल्ट रे ए सुविधाटा न रहू एटा टोटल ऑल ओवर ओडिसा रो 30 डिस्ट्रिक्ट्स को आसु आउ समस्ते आरो सुविधा बेनिफिट्स ता पांतु आउ जदी किछि क्वेश्चन अछि काहरो कहिबे नहले सस्मिता मैडम तो जल्दी रे थिले
से बहुत सुंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयारी करचंती सेटा हमर ओसीएफ ग्रुप रे शेयर हे जिवो and with madam's telephone number. So if anyone has anything to ask about whatever farming related things, she is always there. Thank you so much, Asmita madam, and thanks from the family of OCF, Odisha Corporate Foundation, and definitely ame au thare basiba ahuri kichi kichi adhika dinso jodi kichi janibar thibo ame apanko